Hi everyone, and today I'm going to solve question number 4th and 5 from exercise 3.2 of one question. So ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैंने इसके जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है मैंने यहाँ उतार लिया है। इसको इक्वेशन 1 दे दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.2x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1.3 माइनस 0.3y। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2, ठीक है। x से निकाली, इक्वेशन 1 से निकाली, 2 में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पुट करते हैं तो 0.4 और यहाँ क्या है हमारा 1.3 माइनस 0.3y, x की वैल्यू पुट कर देनी है, एंड अपॉन में 0.2 एंड यहाँ बचा क्या है हमारा 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इससे हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो इससे ही कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 2.6 और माइनस का 0.6y प्लस 0.15y इक्वल टू 2.3। तो इसको सॉल्व करते हैं बचे हुए को। तो ये हो जाएगा हमारा 2.6 को मैं राइट साइड भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, और माइनस 0.6 एंड प्लस 0.5, तो कितना हो जाएगा माइनस का 0.1 y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। तो आएगा हमारा 0.1, ये आएगा हमारा 0.3, ठीक है। और माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y कितना आ जाएगा हमारा 0.3 अपॉन में 0.1 पॉइंट हटाया, आ जाएगा कितना हमारा ओनली 3, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 आ गया। अब इसको y को हम किसी में इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन किसी में पुट कर सकते हैं, तो 1 में कर देते हैं। तो y को 1 में पुट करते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले लिख लेते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो 0.2x प्लस 0.3y की वैल्यू 3, 1.3। तो 0.2x 0.9 इक्वल टू 1.3। तो 0.2x 1.3 माइनस 0.9, तो 0.2x 0.4, x इक्वल टू 0.4 अपॉन में 0.2, पॉइंट रिमूव एंड 2 टू जा 4, तो 0। तो आंसर आ गया हमारा 2। तो x आया हमारा 3 एंड y आया हमारा 2। तो देयरफॉर x is 2 and y and 3. And similarly we can solve the question number 5 as well. So इसमें हमें √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस माइनस So now we will solve question number 5.
So let's use the equation 1. So if we find the value of x or value of y, let's start with finding the value of y from the equation 1. So root 2x plus root 3y is equal to 0. Then root 3y will be minus 2 root x and y will be minus 2 upon में root 3x. Fine. Let's put it inside, or let's substitute this value of y in equation 2. Let's do this. So if we put y in equation 2, we will get root 8 and inside the bracket we will have root 2x upon my root 3 and will is equal to 0. So we will have root 3x, basically plus minus will be minus. What is this? No, it was correct. So it was minus already, so I just put it. Now root 8 and inside the bracket, so we can open this bracket and this will be plus, now minus, and we will have root 16 upon my root 3 x is equal to 0, and we know that square root of 16 is 4, so we can write it as root 3x and 4 upon my root 3 x is equal to 0. So how much can we get from this? So if we take common x, or we can solve it. Yeah, let's take common x. Let's take the x outside of the bracket. Let's take it common, and we will have root 3 plus 4 upon my root 3 is equal to 0, and then we can solve it further, and it will be 3 plus 4 root 3, it's not 4 only, so 3 plus 4 upon my root 3 is equal to 0. We can send it there, so everything will be 0, so x will be 0. Fine. So that's how you can solve this question. So that's how you can find the value of x. Now you can put this you can substitute the value of x inside the equation 2 or 1, any you can put anywhere. So let's put inside equation of 2 or 1. Let's put it in one equation. So we will write substitute x in equation 1. Let's put inside this equation. So root 3, what is that? Root 2x plus root 3y is equal to 0. That's the equation. Yes. Let's put x as 0, so it will get all 0, and we will have only 3 y will be equal to 0 and y will be also 0. So we can say that therefore x is 0 and y is equal to 0. So this is how we can solve this question. Hope you like it. Yeah, subscribe for more video, and I hope you can solve these questions. These fraction questions are quite easy and you must solve this at your own, but these questions could be difficult, so that's why I just thought I should solve it for you guys, and you can just cross check what went wrong with your answer if your answer is not matching with the answer given in the back. So yeah, hope you like it. Subscribe for more video to learn.